भारत ने यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस को कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराक उपहार के तौर पर देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की डिजिटल खुली बहस के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के शांति रक्षकों को हम 2 लाख खुराक उपहार के तौर पर देने की घोषणा करते हैं। जयशंकर ने भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा कि हमेशा दूसरों का कल्याण की बात मन में रखकर अपना काम करो। भारत इसी दृष्टिकोण के साथ कोविड-19 चुनौती से निपट रहा है और उन्होंने परिषद से अपील की कि वो इस चुनौती के विभिन्न आयाम से निपटने के लिए मिलकर काम करें। भारत टीका संगठन, गवी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और एक्ट एक्सेलरेटर के साथ मिलकर सक्रियता से काम कर रहा है और इसके योगदान ने कोविड-19 को हराने में बड़ा योगदान दिया है। इस घोषणा के कुछ घंटों बाद यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. मूर्ति ने ट्वीट किया, हम रक्षकों के लिए रक्षा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए 2 लाख टीके भेंट करने की घोषणा की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज के अनुरोध पर तत्काल काम किया। जयशंकर ने परिषद को बताया कि दुनिया का औषधालय भारत कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहा और उसने पहले ही 150 से अधिक देशों को अहम दवाइयां, किट, वेंटिलेटर और पीपीई किट मुहैया कराई है, जिनमें 80 देशों को अनुदान के तौर पर मदद की गई है। दुनिया का औषधालय आज वैश्विक स्तर पर टीकों की चुनौती से निपटने के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने बताया कि स्वदेश निर्मित एक टीके समेत 2 टीकों के इस्तेमाल को पहले ही आपात स्थिति में अधिकृत किया जा चुका है। इसके अलावा कम से कम 30 टीके विकास के अलग अलग चरण में हैं। उन्होंने बताया कि भारत टीका मैत्री की पहल के तहत दुनिया को टीके मुहैया करा रहा है और अपने मित्रों और साझेदारों को टीके सीधे भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि हमारे निकट पड़ोसियों से शुरुआत करते हुए दुनिया भर के 25 देशों को पहले ही भारत निर्मित टीके भेजे जा चुके हैं। आगामी दिनों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई से लेकर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीपों के देशों समेत 49 और देशों को टीके की आपूर्ति की जाएगी। भारत की टीकाकरण मुहिम अब तक की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिमों में से एक है, जिसके तहत 30 करोड़ लोगों को आगामी 6 महीने में टीका लगाया जाएगा। 1 महीने पहले शुरू हुए हमारे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पहले ही करीब 70 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सुनिए आखिर विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा। Mr. President, Foreign Secretary Raab, let me begin by thanking the United Kingdom for organizing this discussion today. I also appreciate the insightful briefings on the challenges that we are confronted with regarding the availability, accessibility, affordability, and distribution of COVID-19 vaccines in conflict-affected regions. As we assess the impact of the pandemic and the prospects of recovery, including through the availability of vaccines, there are 5 concerns that India would like to share. 1, lack of global coordination regarding vaccine distribution will hit conflict-affected areas and poorer countries hardest. The ICRC estimates that more than 60 million people in such areas are at risk. 2, there currently exists a glaring disparity in accessibility of vaccines globally. Equity in access to vaccines is important for mitigating the impact of the pandemic. 3, this disparity calls for cooperation within the framework of COVAX, which is trying to secure adequate vaccine doses for the world's poorest nations. 4, from an economic standpoint, the costs of inequitable vaccine distribution are truly massive. The International Chamber of Commerce predicts that the global economy stands to lose as much as $9.2 trillion if the international community fails to address vaccine inequity. And 5, routine immunization programs have been thrown into disarray. Due to the pandemic, about 80 million children in at least 68 countries are at risk of diphtheria, measles, and polio. Mr. President, in order for the world to put the COVID-19 pandemic decisively behind us and to emerge more resilient, I would like to put forward the following 9 points for our collective consideration. 1, persist with the vaccination drive along with other public health measures to slow down the virus's ability to infect new people and mutate further. 2,
collaborate with each other on genomic surveillance to track virus mutations and variants, and exchange information in this regard in a regular and timely fashion. 3, effectively address public resistance to vaccines. Vaccine-related information must be contextual, empathetic, and culturally sensitive, while providing scientific and accurate facts to allay the fears and concerns of the public. 4, improve public health infrastructure and build capacity through effective training programs in vaccine delivery, especially in areas where health infrastructure is weak. 5, stop vaccine nationalism. Indeed, actively encourage internationalism. Hoarding superfluous doses will defeat our efforts towards attaining collective health security. 6, strengthen the COVAX facility to ensure equitable distribution of vaccines to all in a fair and equitable manner. 7, urgently resume immunization programs across the world before children's lives are threatened by other diseases. We simply cannot trade one health crisis for another. 8, stop disinformation campaigns taking advantage of this pandemic to advance their nefarious objectives and activities. And 9, proactively prepare for the next global pandemic by focusing on improving capacities, developing protocols, and building a knowledge base and expertise. Mr. President, India has been very much at the forefront of this global fight against COVID-19 pandemic. We had earlier provided critical medicines, diagnostic kits, ventilators, and PPEs to more than 150 countries, about 80 of them on a grant basis. Today, the pharmacy of the world is stepping forward to meet the global vaccines challenge. 2 vaccines, including one indigenously developed, have already been granted emergency authorization. Additionally, as many as 30 candidates are under various stages of development. In one of the largest vaccination drives ever, India itself will vaccinate about 300 million frontline and healthcare workers, elderly and vulnerable over the next 6 months. Our vaccination program, which has begun a month ago, has already seen nearly 7 million people vaccinated. Under the initiative of Vaccine Maitri, which translates into vaccine friendship, India provides vaccines to the world. We are, of course, a significant source of supply to the COVAX facility. But in addition, India is also directly sending vaccines to our friends and partners. Starting with our immediate neighbors, 25 nations across the world have already received Made in India vaccines. 49 more countries will be supplied in the coming days, ranging from Europe, North America, Latin America, the Caribbean, to Africa, Southeast Asia, and the Pacific Islands. Keeping in mind the UN peacekeepers who operate in such difficult circumstances, we would like to announce today a gift of 200,000 doses for them as well. We are working actively with Gavi, WHO, and ACT Accelerator. Our contribution has also supported the SARC COVID-19 Emergency Fund. Mr. President, the Bhagavad Gita states, do your work with the welfare of others always in mind. That is the spirit in which India approaches the COVID challenge and urges this Council to work collectively to address its different dimensions. I thank you, Mr. President.